guys, I hope you all are doing well. In today's video, I'm going to show you about how easily and quickly you can make green tea scrub for your face. So let's not waste the time. Let's get started with the video. So for making this green tea scrub, I'm using only two things. One is 1 spoon of honey and the second one is green tea. तो ग्रीन टी मैंने आज सुबह पी थी और उसके बाद मैंने ये सेशे रख लिया था कि जिससे मैं इसका स्क्रब बना लूंगी। तो इसको अब मैं कट करके इस बाउल में, एक छोटा सा आप कोई सा भी बाउल ले लो, जैसे मैंने अभी ये बाउल लिया हुआ है, एक छोटे से बाउल में मैं कट करके इसको 1 चम्मच हनी के साथ मिक्स कर लूंगी। तो हनी और ग्रीन टी मिक्स करने के बाद ये कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी का बना है और ऐसी ही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। सो नाउ दिस स्क्रब इज रेडी टू यूज ऑन फेस। और अभी मैं ड्रेस चेंज करके अपना फेस वॉश करके देन आई विल यूज दिस स्क्रब। ओके, तो फेस मैंने वॉश कर लिया, ड्रेस भी मैंने चेंज कर लिया ताकि मेरी ड्रेस गंदी ना हो। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ यू हैव टू यूज दिस स्क्रब ऑन योर फेस एंड हाउ हैव टू मसाज जेंटली। तो नाउ आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक एनीथिंग, यू हैव टू जस्ट वॉच। फेस में लगा लिया। नाउ वी विल वेट फॉर द 5 मिनट्स एंड आफ्टर 5 मिनट्स वी विल जेंटली मसाज। हमें रब नहीं करना है ज़्यादा तेज से, बिकॉज अगर आप ज़्यादा तेज करोगे देन आपका जो स्किन टिश्यूज है वो डैमेज हो जाएंगे और फिर आपका फेस भी खराब हो जाएगा। तो इसलिए आपको इसे हल्के हाथों से मसाज करना है, लेकिन 5 मिनट का वेट करना जब तक ये सूख नहीं जाता है। ठीक है, अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सूख चुका है, तो अब मैं जेंटली मसाज करूँगी। आपको ज़्यादा रब नहीं करना है, बस ऐसे आराम आराम से। अब मैं फटाफट से वॉश करके आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि स्क्रब के बाद मेरा फेस कैसा होता है। आई होप मेरा आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, और अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो ऐसे ही आप स्क्रब बनाइए ग्रीन टी यूज़ करके और अपने घर पे लगाइए। क्वारंटीन का टाइम है, लॉकडाउन है, सो यू पीपल हैव लॉट ऑफ टाइम टू टेक केयर ऑफ योर स्किन, राइट? तो ऐसे ही आप अपने घर पे बनाइए। और इफ़ यू हैव एक्ने प्रॉब्लम देन जस्ट ऐड 1 टेबलस्पून ऑफ राइस फ्लोर, और फिर अगर आप उसको अपने फेस में लगाते हैं तो आपका एक्ने प्रॉब्लम भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी स्टे एट होम, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ओके, बाय बाय।